association with Facebook, hashtag Startup is a stage for college students to start up new ventures while they are in college. Good morning to our guest, faculty, teachers and dear students. We welcome you to yet another edition of Josh Talk. Started off as an employee for ICICI Bank, Bhupendra Singh drew to become the youngest board member of super luxury automotive brand Porsche. He has diversified experience in retail assets, commercial liabilities and business banking. He started his own venture in the space of debt restructuring and financial architecture by the name of Bankers Bank and Trust Policy INC. Sir, the stage is all yours. Please come to the stage and let the students endeavor your knowledge. मैं सबसे पहले तो मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेटर्स का थैंक यू करना चाहूँगा कि जिन्होंने ऐसा एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया. The best part is having such an ecosystem. I recall a decade back when I started my career. So the entrepreneurship was there from the beginning. I started my career as an off-roll employee. Off-roll employee आप पूछोगे वो क्या होता है? Off-roll employee होता है कि आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, बट आपको पे उस कंपनी से नहीं आती, एक किसी थर्ड पार्टी कंपनी से आती है. I was an off-roll employee for an ICICI bank, where my pay used to come from a third party company. And you'll be surprised, the first day when I joined the organization, I was not offered a seat. I used to sit on a dustbin. I'm here to learn and grow. And that is the one thumb rule of my life. Every day when I woke up, the only thing that's upon my mind, what I am learning today. Learning and growing is a part of life. हम तो वैसे ही, I'm fortunate I am born in a Sikh family. सीखना meaning है सीखना. तो my father used to say, सीखदा काम है सीखना. तो अंदले श्वास तक सीखना है. अंदले श्वास तक सीखना ही सीखना है. So that's how my journey started. I from an off-roll employee grew up to become the youngest member of board of directors of the super luxury brand Porsche. Just to give you a brief, a guy who is buying a 1 crore car is somewhat close to 100 crore of net worth. To make it simple for you, like I drive, let's say 5-10 lakh rupees car, and उसका simple multiple है, मैं 10 गुना 50 लाख या 1 करोड़ के घर में रहता हूँ. Right or wrong? Right or wrong? Same way, a guy who is buying 1 crore car is having a net worth of 100 odd crores. Right? So I was meeting only the millionaires and billionaires of the people. And for this opportunity, I was working for a Deutsche Bank, a German bank. I got a call from a dear friend of mine. He said, Germans are coming to India, the super luxury brands, and they are looking for some smart people, not from the appearance, from the number crunching point of view. I said, I'm already more than happy. I'm doing more than what I desire. I'm being always in the top performer in the banking arena where I have been, Pan India and all the North region, Zonal region, and so on. I said, I'm not interested. He said, go and see at least. I got a call from his secretary. He said, the CEO wants to meet you at Hotel Claridge's. Hotel Claridge's? मैंने लाइफ में बहुत इंटरव्यू दिए, बट किसी ने 5-star होटल में इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया. मैं कहा ओके, आई एम इंटरेस्टेड, आई विल कम एंड सी हिम. तो जी मैं क्लैरिजीज होटल पहुंचा इंटरव्यू के लिए. He said, man, what is stopping you to join us? We called you thrice. First time you refused, second time you refused, third time now you came up. I categorically told him in one single line, sir, I am more than happy. I'm already trying what I set the expectations for. I'm already a top performer. He said, that's why you are here with me in this Hotel Claridge's.
I paid 80,000 rupees for this meeting. I paid 80,000 rupees. I said we could have also met at a CCD in 180 rupees as well. He said, that's why you are here. I said, sir, let's come to the point. He said, what can make you join us? So I said, I'm good at number crunching. I said, 100% pay hike. This guy was much smarter. He said, join me in a week's time or offer withdrawn. Join me in a week's time or offer withdrawn. And in banking, there is a mandate that you can't move on without serving 3 months notice. You can't move on without servicing. Even if you want to pay off your relieving period, you can't move on. I said, that's the way it is. Sir, I'll get back to you. I went on. Long story short, I convinced my management that I am taking an urge, a step up in my life. I want to move on. I joined Porsche in a week's time. And guess what? What next happened? I was fired on the 4th day of my job. I just give you a brief. Can all of you guys please close your eyes for a 30 seconds? Just imagine you guys reach home today and your parents said, हमने तुम्हारा सब सामान पैक करके ना बाहर रख दिया है. You are checked out of the house. हम दुखी हो गए आप लोगों से, आपके व्हाट्सएप से, आपके फेसबुक से, आपकी कॉलेज अटेंडेंस से. कैसा फील होगा आप लोगों को? यू कैन ओपन योर आइज. ऐसे ही कुछ मेरे साथ फील हुआ था कि आफ्टर सर्विंग ए सक्सेसफुल करियर फॉर 13 long years and on the 4th day when I am reaching office, CEO calls me and said, you're fired. I said, what? He said, you're fired. I had no words to say. I took my bag, started the car, came rushing back to home. I was putting up in Janakpuri those days. I reached the Harinagar red light, parked the car on the service lane and started crying like a baby. I literally cried like a baby. I was weeping in tears as if I was drowning down in an ocean. There was no hope. I was about to die. With all energy, enthusiasm, I pulled up myself, reached home. My wife asked me, why you so early? And I'm a truth lover. I always love to speak truth. कई बार मेरे को कहते हैं, कह रहे सत्यवादी हरीश चंद्र तो कलयुग में ही पैदा हुआ हमारे. So I categorically told him, I'm fired. So one word of encouragement. That what she said. She said, what if you are fired? That was not the only company, nor will be the only company in the world to offer you a job. You can always get a new job. And that one single word of encouragement changed the way my outlook towards life. That day, something sparked in me, and the long desire of startup took the shape. Very next day, I got a call from the office. सर वो आपके पास लैपटॉप और मोबाइल पड़ा है ना कंपनी का, वो तो दे जाओ. मैं कहा कल ही ले लेना था. मैं वहाँ पे सरेंडर करने गया तो पंजाबी भाषा में कहते हैं ना, थोड़ा मम्मा थता गया. सर नौकरी ढूंढने में भी बच्चे ला दूं. उन्होंने कहा जी ज्वाइन कर लो. ठीक है जी. एंड यू विल बी सरप्राइज,
I was fired 4 times in 3 months' time from the same job. 4 times, a top performer throughout his career was fired 4 times in 3 months' time. कोई क्वेश्चन दिमाग में आता आपको? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? I was not adaptable to the new ways of the company. They were so fast forward. I was not that fast forward. I was not adaptable. I realized this the hard way. And the moment I realized this, the game was changed 360 degree for me. And the 4th month, I was offered promotion, 30% pay hike. And a company which offered 15 to 20% in annual pay hike has offered me 30% pay hike in the 4th month. I was promoted to become the youngest member of the board of directors. What initiated that change? Only one line. You are fired. I took that line as if I am burning in fire. What I did, I tell you my real story, what I did. For 1 year, I stopped all WhatsApp. As if I was not existing on social media platform, Facebook, everything. I was not using my personal number, only office number. हम सब ने सुना है बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस हम सब देखते हैं. बी फोकस टुवर्ड योर गोल्स, बी फोकस. वो फोकस कैसे आता है? वो फोकस जब अंदर से आग लगती है तब आता है. कुछ करना है. Then I started meeting all those millionaires and billionaires. जब भी मैं वो millionaires और billionaires को मिलता था, I started interviewing them. मैं अपनी डील कम करता था, उनकी इंटरव्यू ज्यादा लेता था. मैं कहा सर आपने कैसे स्टार्ट किया था? वो कहता भाई मैंने तो रोजी रोटी कमाने के लिए स्टार्ट किया था. I have a vision. I started jotting all the notes. I met some close to 200 odd millionaires. Who and who of the city? I could easily name those, but since those are very close, they refrain to get themselves named. So I am refraining the names of those people. Some were very, very, very gentle and kind. They understood my desire to excel. When I took the interviews, I jotted on their how they excelled. I started the journey on those notes. And in a year's time, my net absolute contribution in terms of revenue to the company was 2 crore 48 lakh rupees. My yearly target was 70 lakh rupees only. The guy who was previous to me, the yearly target was 35 lakh rupees. The company was smart. They gave me a target double than the previous guy. But my net absolute contribution was 2 crore 48 lakh rupees. The board sat to interview me. The board sat to interview me. What you do differently, man? That you are doing 2 crore 48 lakh rupees. आप क्या करते हो? The sales team used to accompany me. सर आप मेरे साथ चलो, आप मेरे लकी मैस्कॉट हो. आप जोन सी डील पे जाते हो डील क्लोज हो जाती है. आप किसी बिजनेस की बात नहीं करते, डील फिर भी क्लोज हो जाती है. ऐसा क्या करते हो? My only word to them was, this company is mine. I consider as Porsche as my company. I consider this, I am the CEO of Porsche. Just to share a small instance, I met one millionaire guy for a meeting. Like some people have arrogance and attitude and ego as they grow up the ladder of life. So when we meet up, we shook hands. So the gentleman just shades नीचे किए और ऐसे हाथ किए उसने ऐसे. I felt very embarrassing. मैंने हाथ ऐसे आगे बढ़ाया था हेलो करने के लिए. मैंने हाथ पीछे खींच लिया. This guy realized this man has self-respect and self-dignity. He is man of principles and values.
Now we all have heard of all these phrases. I too have heard over the period of time. Values, principle, dignity. So बार वो कैसे होती है? You walk the talk. You walk the talk, and that's something that you develop over the period of time. The same guy was negotiating with us from last 1 year. We closed the deal with zero negotiations, just by shaking hands properly. So cut short, startup. Day came, I realized I have matured up to start my own venture. I met with the CEO, said my humble submission, I want to move up the life, I want to move on. And my one liner was, I am firing myself from this job. I started my own venture trust policy in the domain of financial architect, debt restructuring, and for 6 months I didn't close one single deal. 6 months, one single deal. And the very first deal which I closed was of 35 crores, the highest ever in my lifetime. So start up, coming to the point. Once we ignite the fire in ourselves, that day is startup for us. While I was sitting in the green room, a girl approached me. She said, I want to start up. How should I do it? I said, I am no more global Gyani, nothing. That's my real story. Follow your inner calling. My inner calling was there from last 15 years. That I want to start up, I want to start up, I want to do something of my own. That makes me recall one few instances. While in this span of my own startup, for 6 months, I was not making any money. All my savings were blown off. I thought of taking up a job to make survival for myself. I went out to get a job. The moment I entered the interviewer's cabin, I said only one thing. I said, what a pleasant day. It's a rainy day. I love such weather. It was August time, rainy season. I said, what a pleasant day. I love such kind of weather. My productivity gets double. He said, यार कब से ज्वाइन करोगे? मैंने कहा सर आपने इंटरव्यू तो लिया नहीं. कहता यू आर डन एवरीथिंग. मैंने कहा आपने तो मेरा नाम भी नहीं पूछा. कहता है यू आर ज़ील. I have noticed everything. Go to my senior manager and get it. Another instance, I went on to meet someone to give an interview, and he said, "What's your schedule for the day?" I told him I wake up, read something to feed my mind. I brush my mind, then brush my teeth. I said, "What? I am hearing this for the first time. You brush your mind?" I said, yes. Every day we brush our teeth, we take shower, and the most important thing which drives us throughout our life, brush our mind. वो कहते हैं sir, can you exchange seats with me? I should be on your side, you should be on my side. Why these instances were happening? People started calling me, you are an enterprising person. Because that startup thing has ignited. The startup thing had ignited. Startup is something you are on your fire to become the best version of yourself. To summate, I would only say one thing. You hold the ultimate power. You hold the ultimate power to define who you will be. Thank you so very much. Students will certainly learn from your words of wisdom. Now, we have got you two magnetic people from the world of travel, dance and lifestyle. For them, we'll pass on the podium to Devam Tripathi. Startup is, you might be thinking what exactly startup is. Startup is an initiative by Facebook and Joe Stocks. Okay? और our mission is to go at least 500 cities in the country, मतलब, and to make
1 lakh college student like you and me as an entrepreneur. So this is exactly the mission of startup. So this is exactly the startup mission is जो stocks का mission ही यही है कि everyone has something जो अंदर दबा हुआ है, चिराग, मेरे दिल का चिराग, वो बाहर आ जाएगा. Then you became people like Bhupinder Singh, people like start the biggest people you know them. But ladies and gentlemen, the word entrepreneurship has very little relationship with the startup, but a very big relationship with the attitude that you possess. It's all about कि अगर आपको लगता है कि if you want to do something which you want to do as what he wants to do, only sales, कोई फर्क नहीं बनता कि मतलब यहाँ बैठाया जाए वहां बैठाया जाए, sales complete करनी, that's it. अगर आपको इस बात से फर्क पड़ता है कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, that exactly entrepreneurship is exactly. ठीक है, तो this is the whole mission. And now let's move into the presentation. It's like people fail so many times to get something, but हम लोग इस era में हैं जहाँ we can start without being failed. ठीक है, ऐसा नहीं, failure is inevitable, but there is something the digitalization has given us so much opportunity कि 4 बार फेल होने की जरूरत नहीं है. You can ignite your spark living in a college step. So this is the whole mission of startup. Okay, so this is a mission. Facebook चाहता है, Facebook already has 2 billion people, but उसको अभी भी चाहिए कि the community should grow. 2 billion is exactly how much current all the population of China and half of the population of India. फिर भी Facebook का पेट नहीं भर रहा. ऐसा ये है because it's not about the people who are there on the Facebook, it's about the community that you build up. There is no foundation, there is no, ऐसा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान चाइना में कोई बैरियर है फेसबुक पे. Everyone is same. So this is a mission of Facebook. This is the whole community. कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये यहाँ के है वहाँ के है. It's all about Facebook is the itself a country. ठीक है, जहाँ पे कोई बैरिकेड नहीं. How many of you have heard about Uber? 0 of its own, exactly. How many rooms does Airbnb owns? 0. How many rooms does Oyo Rooms own? नहीं, ओयो रूम्स के बाद एटलीस्ट रूम तो है, ओयो रूम्स तो एक रूम तो है उसके पास, बट नहीं, बट हाँ, एग्जैक्टली, हाँ, 0. बट द फैक्ट इज लेट्स अब द बिटर कंक्लूजन पर आते हैं. द वर्थ ऑफ ओयो, सॉरी, उबर, द वर्थ ऑफ उबर और द वर्थ ऑफ एयरबीएनबी is much more than the worth of any taxi company in the world, is much more than any hotel chain in the world. रेडिसन का नाम सुना है? उसके पास कितने रूम है पता है? उसके पास होटल्स हैं, रूम तो बहुत ज्यादा है उसके पास. उसके पास 250 से ज्यादा होटल्स हैं. कितने कंट्रीज में पीछे वाले 250 होटल्स हैं उनके पास, ठीक है, बट उनकी वर्थ इज हाफ ऑफ द एयरबीएनबी, जिनके पास एक भी रूम नहीं. द फैक्ट इज कि देयर इज नो सच फिजिकल एसेट. अब फिजिकल का कोई मतलब नहीं हो गया, ठीक है. द होल ऑफ द थिंग इज डिजिटलाइजेशन, और ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये रिवॉल्यूशन है. People are using it. So in this workshop, how can we use every inch of the internet? We can use this digitalization. We can have the marketplace of our own. ठीक है, कंपनी से निकाले जाने की कोई परवाह नहीं है. अगर कुछ होता है तो डीएक्टिवेट कर देना अकाउंट, ठीक है. But there is something we can start from now. But how many of you have used this? So tell me, which is the most used word of 2016? What can be? Yeah, this is that word. तो word खत्म हो रहे हैं. We are using this. ठीक है, तो शेक्सपियर के लिए दुखी होने वाली कोई बात नहीं है. पढ़ा ना 10th में शेक्सपियर, हाँ, तो उसके लिए दुखी होने वाली बात नहीं है. द वर्ल्ड इज चेंज्ड, वी आर चेंजिंग द वर्ल्ड हैज चेंज्ड एंड द वर्ल्ड इज मोबाइल. फाइन, तो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. ठीक है, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, द वर्ल्ड इज मोबाइल. नाउ कमिंग टू द प्रेजेंटेशन. ठीक है, सो नाउ हु इज द हीरो ऑफ दिस डिजिटल एरा जो चल रहा है इस समय? कौन है जो लीड कर रहा है डिजिटलाइजेशन को? गूगल मतलब इट्स नॉट अबाउट की कंपनी. So Facebook and Instagram are the leader. This is the girl. Next, ठीक है. तो people are spending at least 20% of time on the Facebook. Now हम समझते हैं कि when you come to online, चीजें कितनी आसान है. You don't need to go to advertising company. आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है. So it's like tools you can use. Next slide please. तो नाम डिसाइड कर लिया आपने. नाम डिसाइड करना in offline is equivalent to the page creating in online. शिवाय उसका नाम है, शिवाय बेकरी. तो you have created the profile, personal profile page. आपने बता दिया कि मधुबन के पास मेरा कॉलेज है. वट एवर यू थिंग्स यू वांट टू डिस्कस विद, किस इंडस्ट्री में है आपने ये बता दिया. ठीक है, नेक्स्ट, ऑल यू नीड टू डू इज, एंड द फैक्ट आपके सामने, 100 million hours of videos are shared every day. So 6 of the top 10 most used apps globally are messaging apps. All the apps you are saying is is the messaging app. यानी कि लोग बहुत ज्यादा ही बातें करते हैं. लोगों के पास कहने को बहुत कुछ है. If you have something to say, people will share. ठीक है, let's say you have some idea. अब ये गुड मॉर्निंग मैसेजेस के अलावा भी बहुत देयर आर सम मैसेजेस जो शेयर की जा सकते हैं. समझ में आया? दिस ऑल यू कैन डू ऑन द मैसेंजर. फैक्ट टू अंडरस्टैंड इज कि मैन वी आर यूथ. ठीक है, पढ़ाया जाता है हमें. द नॉलेज इज व्हाट विजुअलाइजिंग द थिंग.
अगर इफ यू कैन कंप्रीहेंड द पावर ऑफ डिजिटल मीडिया, चीजें चेंज हो सकती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप के इतने 600 मैसेज आने के बाद अरे यार ये व्हाट्सएप इज सो बैड। सी द पावर ऑफ, 1 घंटे छोड़ दो अपने नालायक दोस्तों को तो 600 मैसेज आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हाउ यू कैन यूज दैट मैसेंजर ऐप इज ऑल अबाउट यू। और जो यूज कर लेता है वो सच जैसा बन जाता है, जो नहीं यूज कर देता वो सिर्फ उसी लड़कों को ब्लॉक कर देते थे। प्लीज मत ब्लॉक किया करो यार, ठीक है। नेक्स्ट, वो मैसेंजर एज अ पेक्युलरिटी कि वो फेसबुक के साथ अटैच है, सो बातें करना थोड़ी और आसान हो जाती है। एंड द रिजल्ट इज कि 1 बिलियन पीपल आर ऑन मैसेंजर, इज लाइक 1 बिलियन पीपल आर ऑन द मैसेंजर एंड 1 बिलियन मैसेजेस आर बीइंग सेंड ऑन पीपल एंड पेजेस। ये बड़ी प्यारी सी फैक्ट है। इंस्टाग्राम कैन ऑल्सो बी यूज एज दी व्हाट द प्रोफाइल पेज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोटोज या फिर सेलेना गोमेज को फॉलो करने के लिए पीपल आर यूजिंग इट। नेक्स्ट, 1/3 ऑफ द बिजनेस स्टोरीज जो शेयर की जाती हैं इंस्टाग्राम पे वो बिजनेस स्टोरीज होती है। आपको मार्केट रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम विल टेल यू कि कौन आपको लाइक कर रहा है, कौन कमेंट कर रहा है, कौन आपके पोस्ट को फॉलो कर रहा है, कौन देख रहा है। सो विद दिस इंफॉर्मेशन यू कैन कंक्लूड कि अच्छा ये है, मैं बना रही तो 2 साल के लिए बट पसंद आ रहा है 200 साल वालों को, तो यू कैन डू द चेंजेस विद ऑल दैट थिंग्स। नेक्स्ट, देयर आर 7 बिलियन पीपल ऑन द अर्थ एंड एवरीवन इज नोइंग अबाउट ऑनलाइन बिजनेस। किसी के पास खुरापाती आइडियाज होते हैं। फैक्ट टू अंडरस्टैंड इज कि आउट ऑफ सो मेनी आइडियाज ओनली फ्यू गेट हाईलाइटेड। हर दिन स्टीव जॉब्स नहीं निकलते, हर दिन भूपेंद्र सिंह नहीं निकलते, ठीक है। हर दिन हम में से, आप में से कोई बहुत अच्छा नहीं निकलता, बट वो जरूर निकलता है कि जो जानता है उसी बीच में से, जो जानता है कि हाउ टू डिफरेंशिएट वन सेल्फ फ्रॉम अदर्स। और ये सोचना बड़ा आसान नहीं है, बस दिमाग को डायरेक्शन देनी तो है। पीपल आर यूजिंग अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस, जहां पे आप जब आप स्वाइप करते हो वो क्या बात है, क्या इमेज आई, एंड देन यू स्टॉप्ड। विराट कोहली ने क्या कहा, ठीक है, वो इतना बोल के छोड़ देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि विराट कोहली काफी है उस पोस्ट को खोलने के लिए। भले विराट कोहली कहते हैं, विराट कोहली ने कहा कि क्या मौसम है, बट स्टिल पीपल आर यूजिंग दैट वर्ड विराट कोहली। सो अभी हम लोग डेमो करेंगे, ठीक है। अगेन मैंने इंजीनियरिंग बोला है, तो वी ओनली नीड 13 मिलीसेकंड्स टू आइडेंटिफाई इट। यू विल सी कि ठीक है कोई इमेज जा रही है, ठीक है, देयर इज समथिंग अबाउट द इमेज जो आपको क्लिक कर जाएगी, ठीक है, एंड देन यू सी, फिर आप उस इमेज को देखोगे। इट्स ऑल अबाउट दैट। सो ऑल यू हैव इज 3 सेकंड, फाइन। सो ये बड़ी बिटर रियलिटी है, डू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। हो सकता है आप में से कई लोग हों जिनके पास आइडियाज हो, बट आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है। ऑल यू हैव इज 3 सेकंड। सो ऐसा नहीं है कि ये बहुत बेकार बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास भी उनके पास भी है, 3 सेकंड इज मोर देन इनफ। बट द फैक्ट टू अंडरस्टैंड इज कि दिस इज अ कंपटीशन। अब कंपटीशन ही नहीं है तो क्या फायदा, समझ में आया? सो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि आप कुछ चीज फॉलो करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। डॉट्स भी ऑटोमेटिकली भी कनेक्टेड। जैसे कि मैं हूँ, आई एम जो स्टॉक्स में हूँ, तो मैं इंजीनियरिंग 2nd ईयर में हूँ, बट मैं जो स्टॉक्स में कैसे पहुंच गया, फेसबुक के साथ कैसे जुड़ गया, देयर इज ऑल थिंग्स दैट गेट कनेक्टेड, क्योंकि मैं वो कर रहा था जो मैं करना चाहता हूँ। ठीक, आपको भी नहीं पता चलेगा कि कैसे आप वहां पहुंच जाओगे जहां आप जाना चाहते हो, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग, सर मैं गलत कह रहा हूँ, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग जो आप करना चाहते हो, आपको नहीं पता कि वो जॉब एसेंट में आएगी कि नहीं आएगी, आपको नहीं पता कि naukri.com वो एड प्रोड्यूस करेगी नहीं करेगी, बट कहीं ना कहीं आपको कोई दोस्त कह देगा, कोई रिश्तेदार कह देगा, कोई दूर का कोई रिश्तेदार कह देगा, चाचा मामा जिनसे कभी बात नहीं हुई वो कह देंगे कि यार ये जॉब है, अरे यार ये तो बिल्कुल वही है। देन यू स्टार्ट विद स्मॉल एंड डू। ये लक नहीं है लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द डेस्टिनी इज। When you choose your own destiny, start creating by own. Exactly. Your thoughts are created by your destiny. So this is the as a youth मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि there is a great responsibility on all of us. ठीक, not अब इतना टाइम है कि नहीं मुझे नहीं पता, but fact to understand कि there is someone who is looking for us and that is India. ठीक है, चाइना भी देख रहा है हमारी तरफ, अरे यार क्या करना है, ठीक है, but the fact is जो डीप आंखों से देख रहा है वो इंडिया है। सो इतना तो मैं जरूर समझता हूँ कि आई हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंट्री, और मैं तो आई विल फॉलो दैट। सो हाँ, अगर आपको जो स्टॉक्स सो गो है, अगर आपके डाउट्स खत्म नहीं हुए हैं, यू कैन मेल मी एट devam@jostocks.com। कुछ भी पूछो, मैं सच में पूरे ऑफिस का सबसे खाली इंसान हूँ, मैं सच में मेल करूंगा। और कोई स्टोरी शेयर करनी हो आपकी, प्लीज डू शेयर विथ मी। कुछ बताना हो कि हाउ दैट जर्नी हैज गॉन, देन यू कैन कम टू द ऑफिस। गुड़गांव में खेलेंगे कूदेंगे, कॉफी पियेंगे, वहाँ की रैपिड मेट्रो देखेंगे, वहाँ के पारस ट्विन टावर घूमेंगे, बट ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट फॉलो व्हाट यू वांट टू डू, थिंग्स विल ऑटोमेटिकली गेट कनेक्टेड मैन। ठीक है, इट्स ओके, फाइन, थैंक यू सो मच। आई एम वेरी प्रिविलेज्ड टू कॉल अपॉन द स्टेज द नेक्स्ट 2 स्पीकर्स। क्यों लाइट कर दिया ये, अच्छा देख, मुनीश नंदा एंड दिव्यानी वर्मा ऑन द स्टेज प्लीज, डू कम एंड एनलाइटन की। अच्छा, मुनीश के बारे में बता दूं कि ही इज अ वेरी ग्रेट ब्लॉगर,
ठीक है, 20 साल की उम्र में उसने अपनी बुलेट उठाई और पूरी लद्दाख घुमाया, ठीक है, और कुछ नहीं था इसके पास, कुछ नहीं, बस एक फोटो के अलावा सीख गए और कुछ इसके पास नहीं था, बट स्टिल इज सो, इसके पास बहुत प्यारे फॉलोवर हैं और मैं इससे पूछ रहा हूँ कि हाउ टू इंक्रीज द फॉलोवर, बट इसने मुझसे पहले बोला कि पहले अकाउंट बना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, तो ये ऑल थिंग्स है। नाउ आई हैंड ओवर दिस ब्यूटीफुल स्टेज, द ब्यूटीफुल क्राउड टू यू। थैंक यू सो मच। Thank you.